हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड के फर्स्ट ईयर का फिजिकल साइंस का टॉपिक है। यूनिट 1 का इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। क्या इम्पोर्टेंस है फिजिकल साइंस के टीचिंग से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट द डिस्क्राइब द नेचर, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। दैट मीन्स फिजिकल साइंस का नेचर क्या है, कंसेप्ट क्या है और स्कोप क्या है। What is the place of physical science in the school curriculum? That means स्कूल कैरिकुलम में फिजिकल साइंस का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या लोकेशन है, क्या प्लेस है, ये सब स्टडी करेंगे। इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर हमने किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका दैट इज़ द डिफिनेशन एंड कंसेप्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द स्कोप। डिफिनेशन एंड स्कोप, डिफिनेशन एंड कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले Physical science is a broad discipline concerned with natural phenomena of earth, atmosphere and space. That means physical science एक ऐसा broad discipline है जो कंसर्न करता है अर्थ, एटमॉस्फेयर और स्पेस के नेचुरल फेनोमेना का। सेकेंड पार्ट में अबाउट द स्कोप, इसका स्कोप है फिजिक्स पार्ट में, एस्ट्रोनॉमी में है, केमिस्ट्री पार्ट्स में और अर्थ साइंस में। ये चार जगह हम लोग बेसिकली इसका ब्रॉड एप्लीकेशन है फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस में। नाउ वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में क्या इसका एप्लीकेशन है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, अर्थ साइंस में। इन फिजिक्स इज ए नेचुरल एंड फिजिकल साइंस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम along with related concepts such as energy and force. More broadly, it is the general analysis of nature conducted in order to understand how the universe behaves. universe कैसे behave करता है, ये सब स्टडी हम लोग स्टडी करेंगे। दैट इज अबाउट द इन फिजिक्स। दैट इज मेन पॉइंट इज फोर्स एंड इट्स लॉ, एनर्जी, ये सब स्टडी हम लोग फिजिक्स के थ्रू करेंगे फिजिकल साइंस का ये पार्ट्स में। नेक्स्ट पार्ट इज एस्ट्रोनॉमी। Astronomy is the study of celestial objects such as stars, galaxies, planets, moons, asteroids, comets, and nebulae, and phenomena that originate outside the atmosphere of Earth, including supernova. अर्थ से बाहर जो एक्टिविटी, अर्थ से बाहर जो फेनोमेना होता है दैट इज़ अ सुपरनोवा, जैसे एक्सप्लोजन्स, गामा रेज, बर्स्ट एंड कॉस्मिक माइक्रोवेव्स, बैकग्राउंड रेडिएशंस। We study all these parts in astronomy. Next part is the chemistry. In chemistry is the study of composition, structure, properties and change of matter. In this, chemistry deals with the subtopics as the properties of individual atoms, the manner in which atom forms chemical bonds in the formation of compounds, the interaction of substance through intermolecular forces to give matter its general properties, and the interaction between the substance through chemical reaction to form different substances. This is the chemistry parts. And next part is the earth science. Earth is all embracing term referring to the fields of science dealing with planets. Earth science is the study of how the natural environments like ecosphere or earth system works and how it evolves to its current states. It includes the study of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. The impact of science and technology is visible everywhere. It has influenced every aspect of man's existence. The youth today need scientific knowledge to understand the nature of planets on which they live and its relationship to the rest of the universe. Man's future is strongly related to scientific advances and the development of productive activity. Science, including physical sciences, has been given due place in our school education program by made as compulsory subjects. Now, science and mathematics should be taught on a compulsory basis to all pupils as a part of general education during the first 10 years of schooling. This statement is given by कोठारी कमीशंस। दैट मीन्स स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स फर्स्ट 10 स्टैंडर्ड तक सबको स्टडी करना
कंपलसरी है. नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल. क्या क्या इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी स्कूल में, तो इसको हमने बेसिकली फॉलोइंग ये सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है. यूटिलाइजेशन वैल्यू ऑफ डे टू डे यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड. इस सारे पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज द यूटिलाइजेशन वैल्यू ऑफ डे टू डे यूज. मॉडर्न इज ए एज ऑफ साइंस. The physical laws and property of matters and the application of scientific principles meet within our everyday life. There is a miraculous change in the ways and method of doing our work and also in our ways of living. We have devised labor-saving gadgets and machines. Science has revolutionized our वे ऑफ लिविंग. हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया इसका ड्यू टू साइंस. एट प्रेजेंट आवर लिव्स डिपेंड्स ऑन साइंटिफिकली इन्वेंटेड गैजेट्स. साइंस के द्वारा जो गैजेट्स इन्वेंट किया गया है उस पर हमारा लाइफ आजकल डिपेंड है. सो मच दैट वी कैन नॉट डू विदाउट देम. हॉबर्ट स्पेंसर हैज़ करेक्टली सेड द नॉलेज गेन थ्रू साइंस इज मच मोर यूजफुल इन गाइडिंग आवर लाइफ स्टाइल दैन गेन थ्रू आवर सोर्सेज. Next part is about the intellectual value. The study of science provides us the opportunity of developing our mental faculties of reasoning, imagination, memory, observation, concentration, analysis, originality, and of systematic thinking. Most important, systematic thinking. It trains the minds of the people, creates very good habits, and develops increasing awareness about themselves, about fellow creatures and about the material universe we reside it. All problems can be solved by mature scientist with his sharp intelligence and wisdom. Next part is the disciplinary value. Science develops our personality as a whole. It inculcates spirits of inquiry, seriousness and systematic thinking. It brings about complete transformation of one's viewpoint. It makes thought process more organized. हमारे thought process को organize कर देता है. It assists us to judge all the good and bad points together with the gain and loss which is likely to be incurred in the plan of action contemplated. It also includes the habit of viewing ए प्रॉब्लम इम्पार्शली विद द अलर्ट माइंड. प्रॉब्लम को देखने का तरीका हमारा बदल जाता है, प्लान ऑफ एक्शन करने का तरीका बदल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कल्चरल वैल्यू. साइंस नॉट ओनली डेवलप्स आवर कल्चर बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग इट. इट हैज़ ए लिटरेचर ऑफ इट्स ओन which is no less appealing that of more humanistic studies. A knowledge imparted by the study of different branches of science develops in us a logical mind. लॉजिकल माइंड क्रिएट कर देता है हमारे माइंड को. ए क्रिटिकल जजमेंट एंड ए कैपेसिटी फॉर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन. आवर वे ऑफ लाइफ which has been changing with the passage of time and progress of science. We can judge the progress of civilization and culture of a nation by its progress in science. Next point is about the moral value. Most important, moral value. Some people are of the view that science is responsible for lack of faith in God, but in reality the situation is reverse. Science and its pursuit not only include all the traits of morality but also develop them. Every scientist is a speaker of truth, although in the modern materialistic world truth may not always succeed. In science, every conclusion depends upon tests and actual observation and not by cheat and deceit. The ideal of truth is beauty is always kept in mind. Next point is the aesthetic value. Every man of science has a passion for truth. According to well-known English poet John Keats, truth is beauty. In nature, everything we witness is beautiful. The discovery of the mysteries of nature is the concern of science. One gets a lot of joy on one's successful discovery or invention. It can be said that a study of science is a source of great pleasure. When one gets answer to his
question about the mysteries of nature, science assists us to make use of our leisure purposefully. In addition to this, science is an art. Every man of science is an artist. Indeed, there is no fundamental difference between art and science. An artist aims more deliberately at beauty, while a scientist ultimately comes to beauty with the help of reasoning and truthfulness. Next point is the vocational value. Science forms the basis of many of the studies of a purely vocational nature, and thus makes people ready for various professions such as medicine, engineering, agriculture, etc. etc. Science has also revolutionized modern vocations such as telephone, radio, and television, broadcasting, petroleum, natural gas departments, and atomic energy commissions are new fields of professions. Next point is about the psychological value. A study of science fulfills the psychological needs of men. It helps in evaluation of natural curiosity and other instincts such as collections, ego, self-expression. The instinct of curiosity is responsible for the urge of investigations, experimentation, research, etc. Thus, the study of science helps in developing all the latent faculties of a child. इसके थ्रू हम लोग लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना को हम लोग स्टडी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ scientific method. A study of science helps in solving scientific problem as a other problem in life. A scientific method involves the following steps. Scientific methods के थ्रू हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द नेचर एंड एम ऑफ द प्रॉब्लम. पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एम क्या है, नेचर क्या है प्रॉब्लम का. एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट स्टेप इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद ऑब्जर्वेशन. जो भी एनालिसिस है उसको फार्मूला के थ्रू हम लोग इंटरप्रेट करना. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिडिक्शन ऑफ अदर ऑब्जर्वेबल फेनोमेना आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिडिक्शन एंड अदर पॉइंट इज अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ द प्रिडिक्टेड फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड. अगला स्टेप में हम लोग अकरेंस एंड नॉन अकरेंस फेनोमेना को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं जो फैक्ट है और अदर पॉइंट को रिजेक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिडिक्शंस. थैंक यू. होपफुली यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे हम लोग अभी सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन का, फिजिकल साइंस, पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोगी मैथमेटिक्स. यदि आपको ये चैनल हेल्पफुल लगे आप तो उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसको रेगुलरली इसको उसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करते रहें. थैंक यू एवरीवन.